Hello students, as we know chapter 6 which is MS Excel working with worksheet has started and still going on. In previous video we have discussed about how can we insert row, column and cells in our worksheet in three different ways. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is deleting cells, row, column. How can you delete cell or any column or any row from our worksheet? So to delete any row, column or cells from our worksheet, we have to follow some steps. They are as follows. Select the cell, row, column that you want to delete. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल रो एंड कॉलम विच यू वांट टू डिलीट. आपको सबसे पहले उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो. आफ्टर दैट ऑन होम टैब इन सेल्स ग्रुप क्लिक ऑन डिलीट बटन. After selecting cells, row or column, whatever you want to delete, just go to home tab. Here you can see this is the home tab. You have to go to the home tab, and from home tab you have to, from sales group, in home tab from sales group, here you can see this is the cell group and this is the delete button. You have to click on delete button. When you click on delete button, एक drop down menu appears. एक drop down menu आपके सामने appear हो जाएगा. So here you can see a drop down menu appears here. Here you can see some options are available here, such as delete cells, delete sheet rows, delete sheet columns, and last one is delete sheet. So when you click on delete cell of cells option to delete the cell, when you click on delete cell option, your selected cell will be deleted. जिस cell को आप select किया वो से delete हो जाएगा. Again when you click on delete sheet columns option, इट विल डिलीटेड द सिलेक्टेड कॉलम. तो अगर आप डिलीट सीट कॉलम सेलेक्ट करते हो तो आपका जो सिलेक्टेड कॉलम है, वर्कशीट का जो सिलेक्टेड कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा. एंड इफ यू सिलेक्ट डिलीट सीट कॉलम, यू कैन से क्लिक ऑन डिलीट सीट रोज. इफ यू सिलेक्ट डिलीट सीट रोज ऑप्शन, योर सिलेक्टेड रोज विल बी डिलीटेड. आप जो रोज सेलेक्ट किए हुए होंगे वो रोज डिलीट हो जाएगा. नाउ मूव फर्दर. Clicking on the deleted cell option, here you can see last option is deleted and the first option is deleted cell option. Here you can see deleted cell option. Clicking on the deleted cell option will display delete dialog box with the following option. अगर आप delete cell option पे क्लिक करते हो, first of all I'm going to explain it again. आप delete sheet column, if you click on delete sheet column, जो selected column will be deleted. अगर आप delete sheet column को चूज करते हो, ऑप्शन चूज करते हो, तो जिस कॉलम को सिलेक्ट किए हुए होते हैं वो कॉलम डिलीट हो जाता है. इफ़ यू क्लिक ऑन डिलीट सीट रोज ऑप्शन, तो सिलेक्टेड रोज विल बी डिलीटेड. अगर आप डिलीट सीट रोज ऑप्शन को चूज करते हो, क्लिक करते हो, तो जो भी रो आप सिलेक्ट किए हुए होते हो वो रो डिलीट हो जाएगा. बट इफ़ यू क्लिक ऑन डिलीटेड सेल ऑप्शन, आप अगर डिलीटेड सेल ऑप्शन क्लिक करते हो तो देन डिलीटेड डायलॉग बॉक्स विल बी एपियर. आपके सामने क्या होगा, एक डिलीट डायलॉग बॉक्स एपियर होगा इन विच following options are available. Here you can see shift cell select, override the content by shifting the data from the left cell to the selected cell. shift cell left अगर ऑप्शन आप यूज करते हो तो इसमें क्या होगा, जो सिलेक्ट है वो आपका कंटेंट शिफ्ट दूसरे डाटा में शिफ्ट हो जाएगा और सेलेक्टेड सेल डिलीट हो जाएगा. शिफ्ट सेल ओवरराइड द कंटेंट बाय शिफ्टिंग द डाटा फ्रॉम द सेल बिलो टू द सेलेक्टेड सेल. अगर आप शिफ्ट सेल आप चूज करते हो तो जो नीचे का डाटा है उस पर आपका वो जो डाटा है जिस सेल का सिलेक्ट किया था उसका डाटा जो उसमें जो भी कंटेंट है वो दूसरे नीचे जो सेल है उस पर वो ओवरराइट होगा और सिलेक्टेड सेल डिलीट हो जाएगा. इफ यू चूज इंटायर रो ऑप्शन, ओवरराइट द कंटेंट बाय शिफ्टिंग द डाटा फ्रॉम द सेल बिलो, इट अपीयर्स दैट द इंटायर रो इज डिलीटेड. इफ यू चूज इंटायर रो ऑप्शन तो क्या होगा कि उस जो सिलेक्टेड सेल जो आप सेल सेलेक्ट जो रो सेलेक्ट किए होंगे उसका जो कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट उसके जस्ट नीचे वाले रो में कॉपी हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो सिलेक्टेड रो था वो डिलीट हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज इंटायर कॉलम. ओवरराइट द कंटेंट बाय शिफ्टिंग द डाटा फ्रॉम द कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द सिलेक्टेड सेल, इट अपीयर्स दैट द इंटायर कॉलम इज डिलीटेड. इंटायर कॉलम, इफ यू चूज इंटायर कॉलम ऑप्शन, ये क्या करेगा, इस पूरे कॉलम में जो कंटेंट होता है वो सारा कंटेंट अपने राइट साइड वाले कॉलम में वो ओवरराइट करेगा. तो ये ऐसा लगेगा कि आपका कॉलम डिलीट हो गया. So I hope you can understand, and then select the required option and click OK. Whatever option you want to do with your on your worksheet, just select the option and click on OK button. आपको फिर OK button क्लिक करना है और आपका ऑप्शन वो वर्क करेगा. Let me show you how can you delete any cell, row and column from your worksheet.
So here you can see I have already opened the MS Excel window and some data are already mentioned here. So now I'm going to show you how can you delete any cell, column and row. So first of all you have to delete, I'm going to delete a column. So when you delete a column, just select the column header. You have to select the column header. When you select the column header, after selecting the column header, go to home tab. Here you can see this is the home tab. You have to, after selecting the column, you have to click on home tab. On home tab you can see a sales group. Okay, here you can see this is the cell group. This is cell is written here. This is the cell group. From cell group you have to choose or click on delete option. When you click on delete option, you can see some options are available here: delete sheet, delete cell, delete sheet column and delete sheet cells. So if you choose delete sheet column, after selecting the column you have to go to the home tab and then from delete option just click on delete option. When you click on delete option, a drop down menu will be appear and just choose delete sheet column. When you click on delete sheet column, what did you see? Your selected column will be deleted. So I hope you can understand how can you delete a column from your worksheet. Let me show you again. If you going to I'm going to delete a row. So first of all to delete a row you have to select a रो. सबसे पहले आपको जो जिस रो को आपको डिलीट करना उस रो को आपको सिलेक्ट करना होगा. सो आई एम गोइंग टू जस्ट select the row you have to click on row header. When you click on row header your entire row will be selected. आप row header पे क्लिक करोगे तो पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा. After selecting the row again you have to go to the home tab. Then in home tab here is the cell group. From cell group you have to click on delete option. When you click on delete button, what did you say? You can see a drop down menu will be appear and here is the option delete sheet row. So if you want to delete the selected row, you have to choose this option delete sheet row. And what did you see? Selected row will be deleted. Okay, आपके यहाँ पे जो रो था वो delete हो चुका है. So I hope you can understand how can you delete selected row or column from your worksheet. Now I'm going to show you selected cell. So to selected cell I'm going to choose this cell. This cell Pratik. This cell here is written Pratik is written here. After selecting the cell, go to home tab and after that go to in cell to go to delete option. When you click on delete button, a drop down menu will be appear where some cells are some options are available here. If you choose delete cell option, when you click on delete cell option, a delete dialog box here you can see this is the delete dialog box. A delete dialog box appear. आपका जो delete dialog box है वो appear हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ options like shift cell left, shift cells up, entire row, entire column. इसमें if you choose shift cells up, अगर आप ये shift cell up choose करते हो तो ये जो सेल का उसका कंटेंट आपके ऊपर वाले सेल में ओवरराइट होगा और आपका जो कंटेंट सेलेक्टेड सेल है वो आपको डिलीट होगा. लेट मी शो यू. After selecting the option, click OK button and what did you see? A selected cell will be deleted. Again if you choose the cell and go to delete option and when you choose delete cell option, delete cell dialog box appear. If you choose this shift cell right left, click on OK button. क्या हुआ आपका जो पहले का जो कंटेंट था वो गायब हो गया और लेफ्ट साइड का जो कंटेंट था यहाँ पे ओवरराइट हो गया. पहले क्या था लेट मी शो यू. पहले यहाँ पे रोशनी लिखा हुआ था. ठीक है. आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल व्हेन यू गो टू द डिलीट सेल ऑप्शन एंड चूज द डिलीट सेल ऑप्शन तो डिलीट आफ्टर सेलेक्टिंग डिलीट सेल ऑप्शन डिलीट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. एंड फिर चूज शिफ्ट सेल लेफ्ट ये आप ऑप्शन चूज करते हो तो क्या होगा जो कंटेंट आपका सेलेक्टेड सेल में जो कंटेंट है वो वहाँ से इरेज हो जाएगा और लेफ्ट साइड का जो भी कंटेंट है आपका वो लेफ्ट राइट साइड का जो कंटेंट है आपका वो आपके सेलेक्टेड सेल पे ओवरराइट हो जाएगा. तो इस तरह से आपको लगेगा हाँ आपको ये फील होगा कि आपका जो सेल है वो सेलेक्टेड सेल डिलीट हो चुका है. लेट मी शो यू. यू कैन सी रोशनी जो रिटर्न था वो इरेज हो गया है, वो खत्म हो गया और राइट साइड में जो कंटेंट था वो इस सेल पे आके आपका ओवरराइट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके सेलेक्टेड सेल को डिलीट कर चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अगेन ऑप्शन another option. Select the cell and go to home tab. From home tab you have to choose delete option and again choose delete cell option. Delete dialog box appear. If you choose entire row, अगर आप entire row option choose करते हो तो ये पूरा जो रो है ये selected रो है ये आपका डिलीट हो जाएगा. सोनू ये जो आप रो देख रहे हो ना सोनू से ये पूरा जो कंप्लीट रो है ये पूरा डिलीट होगा और उसके जस्ट नीचे का जो कंटेंट है वो ऊपर आपके
कंटेंट में कॉपी हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा. लेट मी शो यू. आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन क्लिक ओके बटन. बाकी किसी सोनू का जो कॉलम था वो पूरा इरेज हो चुका है और नीचे जस्ट नीचे वाला जो रो था वो पूरा आपका ऊपर ओवरराइट हो गया. ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू डिलीट एनी सेल कॉलम एंड रो फ्रॉम योर वर्कशीट. So now let's move further. Now here can be shortcut key. If you want to delete your cell row or column with the help of shortcut key, you also delete it. To delete any cell row or column from shortcut, you have to follow some steps. Here you can see, select the row column header and press Ctrl minus delete a row and column. If you want to delete any selected row or column, so you have to just select the row and column header. आपको row और column header का select करना है. And after selecting row and column header, you have to press Ctrl and minus key from your keyboard. आपको Ctrl और minus की आपके कीबोर्ड में वो दोनों को एक साथ प्रेस करना है. And when you press both key at same time, your selected row and column will be deleted. And if you want to delete cell, so you have to first of all you have to select the cell that you want to delete and press Ctrl minus. The delete dialog box appears. Select the required option and option will be आपका आगे वो further move करेगा. Let me show you how can you delete any row, column and cell with the help of shortcut key. Okay. So here you can see this is the Microsoft window. Now I'm going to show you how can you delete any row, column and cell from your worksheet with the help of shortcut key. So first of all, to delete a column, you have to select the column header. When you click on column header, your entire column will be selected. आपका पूरा column select हो चुका है. After selecting the entire column, just press Ctrl and minus key together. आपको कीबोर्ड के का कंट्रोल बटन और माइनस की बटन एक साथ आपको प्रेस करना है. लेट मी शो यू. So here column will be selected. Now I'm going to press Ctrl and minus key together, and your maths column will be deleted. Here you can see आपका जो मैथ्स कॉलम था वो डिलीट हो चुका है. बस आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन एंड की माइनस बटन एक साथ प्रेस करना है. सो योर सेलेक्टेड कॉलम विल बी डिलीटेड. अगेन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ कैन यू डिलीट selected row from your worksheet. Let me show you. First of all, you have to, if you want to delete any row from your worksheet, you have to select the row. To select the row, you have to click on row header and your entire row will be selected. आपका पूरा row select हो गया है. After selecting the row, just click Ctrl and minus key together and your just press Ctrl and minus key and your selected row will be deleted. Here you can see. आपका जो रो सिलेक्टेड था वो डिलीट हो चुका है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू डिलीट एनी रो एंड कॉलम फ्रॉम योर वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ कैन यू डिलीट अ सिलेक्टेड सेल. सो जस्ट सेलेक्ट द सेल which you want to delete and after selecting the cell press Ctrl and minus button. So here your cell will be selected. Now I am going to press Ctrl and minus key. And what did you see? When you press Ctrl and minus key from your keyboard together, आप एक साथ प्रेस करते हो तो ये डायलॉग delete dialog box will be appear and just choose any option. आप जो भी ऑप्शन को चूज करना चाहते हो just select that option and press OK button and your structure cell will be deleted. आपका वो जो सेल था वो डिलीट हो चुका है. So I hope you can understand how can you delete any cell, column and row from your worksheet with the help of shortcut key. Now here you can see you can also delete a cell, row and column using right click. Moving further, after if you want to delete your any cell or row or column with the help of right click, you can do it. आप right click के हेल्प से अगर किसी सेल या कॉलम या रो को डिलीट करना चाहते हो तो वर्कशीट से आप कर सकते हो. Right click on the cell and select delete option in the pop-up menu. Select the desired option in the delete dialog box. So what you have to do to delete any cell, row and column from your worksheet with the help of right click. Just right click on the selected cell. First of all, you have to select the cell. After selecting the cell, just right click on that selected cell. जब आप select जो भी जिस भी सेल को डिलीट करना चाहते हो उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हो. आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल. उस सेलेक्टेड सेल पे आपको राइट क्लिक करना है. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल, स्मॉल पॉपअप मेनू विल बी अपीयर. आपके सामने एक छोटा पॉपअप मेनू अपीयर हो जाएगा. You have to choose delete option from that. Here this kind of pop-up menu will be appear from your worksheet. So you have to choose delete option from that pop-up menu. आपको delete option choose करना pop-up menu से. So when you click on delete option, what did you see? A delete dialog box will be appear. आपके सामने delete dialog box appear हो जाएगा.
or whatever you want to. If you want to delete a row, you just choose entire row option and click OK button. If you want to delete column, just choose entire column option and click OK button. Or if you want to delete cell, just choose whatever any of this option and click OK button, and your selected cell will be deleted. Let me show you how can you delete any cell, row and column from worksheet with the help of right click. Here you can see I am going to delete this computer column from your worksheet, from this worksheet. So after first of all, to delete any column, row or cell from worksheet, you have to select the column. After selecting the column, just right click on that selected column, and when you right click on the selected column, a pop-up menu, here you can see this is the pop-up menu. A pop-up menu will be, pop-up menu appears. आपके सामने pop-up menu आ जाएगा. So you have to click delete option from that pop-up menu. Here you can see this is the delete option. You have to choose this option, and when you choose this option, what did you see? A delete dialog box appears here. So if you delete entire column option, just choose the entire column option and click on OK button. What did you see? Computer columns will be deleted. Now I'm going to show you how can you delete any row from the worksheet with the help of right click. Just select the cell. Here you can see रोहित का जो ये कॉलम है पूरा, रो है पूरा, ये जो रोहित का जो पूरा रो है, इसको डिलीट करना है. So first of all, you have to select the cell. After selecting the cell, right click on it. Pop-up menu appears. You have to choose delete option from the pop-up menu. When you click on delete option, delete dialog box appears. You have to choose entire row option and click on OK button, and your selected row will be deleted. Here you can see. And if you want to delete any cell from worksheet, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. Just select the cell, right click on it. Wait a minute. Right click on it. Pop-up menu appears. Click delete option. Delete dialog box appears. Choose any option. Shift cell left and shift cell up. Choose any option and click OK button. And जो selected cell, English column, जो English cell आप select किए थे वो cell delete हो चुका है. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 6 will be discussed in next video. Thank you.